Hello everyone, welcome back to another chapter of Civics, Chapter 7, which is Understanding Advertising. Students, do you have your favorite chocolates, chips, drinks, and even clothes, shoes, cars, and mobiles? Do you tell your parents to buy a particular brand based on advertisements do you see around you? So, today, advertising plays a very important role in our life. What is advertising? What are the different kinds of advertising? Let us find out. Advertising is a form of marketing communication used to convince a customer to buy or use a product or service. Advertisements can be viewed via various sources of media like newspaper, magazine, televisions, and radio. The focus of an advertisement is to transmit its message in a very short span of time. An advertisement informs the audience about a product or a service and how it would benefit the consumer. Sometimes it has an impact on the human emotions and encourages a person to buy a product that appeals to him or her. Advertisements are made with certain objectives in mind. The main purpose of an advertisement is to attract the attention of a consumer to a product and to buy it. Advertisements give information about a product to a consumer. Advertising creates and maintains the demand for a product. Advertising builds a brand value for a product. Advertising keeps an organization actively visible in public eye. A brand is the identity of a specific product, service, or business in the form of a name, sign, symbol, or slogan. For example, different manufacturers will be trying to sell a packet of dals manufactured by them, so each of them will advertise its product in the best possible manner to win over the buyers. The brand of dal that will be able to attract maximum number of people will have more sales. Sometimes brands use catchy lines, words in their advertisements, which become popular with the consumers. These special lines are called taglines. A popular tagline helps in increasing the sale of a product as people identify the product with its tagline. Dals or pulses are usually sold loose in the market. We usually know dals by their different types like masoor ki dal, urad ki dal. These names are not brand names. When a company takes masoor ki dal and puts it into a packet, it will need to give the dal a special name. It needs to do this so we don't confuse the dal in that particular packet with the dal that is sold loose. They decide on a name like top tasty dal. This naming of the product is called branding. Similarly, in the case of the soap, there are many soap in the market today. When the company will have to give the soap a different and special name, by doing this they create another brand of soap. Just naming the product may not make us buy it. The manufacturers that made the soap and the dal still have to convince us that their soap and dal are better than the others available in the market. This is where advertising comes in. It plays a crucial role in trying to convince us to buy the product that is advertised. Consumer is confused because you really cannot tell the difference between top tasty dal or best tasty dal. Just naming a dal does not help sell it. So advertisers begin claiming certain special values for their brand. From the advertisements, the two dals are saying different things. Top tasty dal is appealing to our social tradition, and best tasty dal is appealing to our concern for our children's health. Values such as treating our guests well and making sure our children get nutritious food are used by brands to create brand values.
So students, advertisements draw our attention to various products, describing them positively so that we become interested in buying them. Advertising is all about building brands. At a very basic level, branding means stamping a product with a particular name of sign. For example, there are many soaps, but every company will have to give the soap a different name. By doing this, they create another brand of soap. Through advertisements, the company uses visuals and images to create a brand values for their product, such that the products may create an impression in customers' mind. Advertisements draw our attention to various products, describing them positively so that we become interested in buying them. Advertising is all about building brands. At a very basic level, branding means stamping a product with a particular name of sign. Through advertisements, the company uses visuals and images to create a brand value for their product, such that the products may create the impression in कस्टमर्स माइंड। आपने जैसे कि 6 चैप्टर में देखा कि मीडिया आपको इन्फ्लुएंस करती है, बैलेंस रिपोर्ट नहीं दिखाते हैं, इसलिए आपको एक्टिव रीडर होना चाहिए। इसी तरह एडवर्टाइजिंग भी आपको इन्फ्लुएंस करते हैं। एडवर्टाइजिंग में भी ये प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिवली दिखाया जाता है। मीडिया की तरह एडवर्टाइज भी एक तरफा दिखाता है, उसकी खराबी आपको नहीं बताता है या नहीं दिखाता है। एडवर्टाइजिंग में ब्रांड यूज़ किया जाता है ताकि उसके प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग और बेटर दिखे। प्रोडक्ट की वैल्यू बताने के लिए वो लोग उसके पॉजिटिव साइड दिखाते हैं ताकि लोग कन्विंस हो जाएं और वो लोग जाके उस प्रोडक्ट को खरीदें। जैसे कि टॉप टेस्टी दाल जो है वो गेस्ट के साथ क्रिएट करके दिखाया जाता है, बेस्ट टेस्टी दाल को बच्चों के हेल्थ के साथ जोड़ के दिखाया जाता है। यही जो ब्रांड वैल्यूज़ है ये इसके साथ एडवर्टाइजिंग में बहुत कुछ जोड़ दिया जाता है, इमोशंस, विजुअल्स, वर्ड्स जोड़ के दिखाया जाता है ताकि हम इन्फ्लुएंस हो और उस प्रोडक्ट को जाके खरीदें। Brand values and social values. Advertisements have a significant place in our social and cultural life. We discuss the advertisements we watch, hear, or read, and also tend to judge people based on the brand products they use. In fact, some products are remembered purely in terms of the words or visuals used in their advertisements. Advertisements play an important role in social and cultural life. Branded products are costly, but companies link them to style design such that people tend to buy them. Advertisements appeal to personal emotion of people, which induce people to buy the products. Branded products cost much more than the products that are sold loose or non-branded ones. This is because of the cost incurred in packaging and advertising. Because of higher cost, many people cannot afford branded products. Advertisements have a miraculous role in changing the thinking and preferences of the people. Over a period of time, people will start thinking that the dal that comes in a seal packed is much better than the one sold loose. They will be persuaded to buy packaged dal only. Though in reality, there is a little difference between branded dal and the dals that are sold loose. जैसे कि लूज़ दाल मार्केट में जो मिलती है वो बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन ब्रांडेड जो दाल होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उनके साथ इंक्लूड होता है पैकेजिंग का कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग का कॉस्ट ऐड होता है, इसलिए बहुत सारे लोग उसे खरीद नहीं पाते हैं, यूज़ नहीं कर पाते, या सील्ड पैकेट जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज़ नहीं कर पाते तो उनको दुख होता है। लेकिन ये सारी खेल है एडवर्टाइजिंग का जो हमें इन्फ्लुएंस करता है खरीदने के लिए। इसी तरह मदर जो है, माँ जो है, वो अपनी पर्टिकुलर ब्रांड सोप खरीदते हैं अपने कंसर्न फॉर हर चाइल्ड, उनके बच्चों के लिए, और जब वो सोप वो यूज़ करते हैं तो उनको लगता है कि वो अपने बच्चे को बहुत केयर और प्यार करते हैं, इसलिए उन्होंने ये ब्रांडेड सोप खरीदा है। और जो माँ ये यूज़ नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते, उनको लगता है कि वो अपने बच्चों को केयर नहीं कर पा रहे हैं ठीक तरह से। इसी तरह जो हमारे पर्सनल जो इमोशंस होते हैं उनके साथ लिंक करके प्रोडक्ट को वो लोग एडवर्टाइजमेंट हमें दिखाया जाता है, जिससे हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं।
जैसे हमारे फेवरेट क्रिकेटर हो, हीरोज़ हो, फ़िल्म स्टार्स हो, वो लोग भी एडवर्टाइज़मेंट में आते हैं और हमें टेम्प्टेड करते हैं, टेम्प्टेड फ़ील करवाते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और जाके इस प्रोडक्ट को जल्दी से खरीद लो। क्योंकि हम उन लोगों को आइडल मानते हैं, उन लोगों को जानते हैं कि वो लोग जो बोलेंगे अच्छे बोलेंगे और उस जो बोल रहे हैं वो सही है और उसे हमें ले लेना चाहिए। एडवर्टाइजिंग में वन साइड इमेजेस दिखाए जाते हैं प्रोडक्ट्स के, रिच पीपल की लाइफस्टाइल दिखाए जाते हैं, जबकि रियलिटी में हमें हमारे आसपास के रहने वाले लोगों की लाइफस्टाइल दिखाना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट में ये देख के ही हम लोग खरीदने नहीं जाते हैं, हम लोग ब्रांड प्रोडक्ट भी देखते हैं, वो हमें किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे फ्रेंड को, फैमिली को, तब जाके हम खरीदने जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट में पर्टिकुलर इमेज क्यों दिखाते हैं, क्यों शो करते हैं, पर्सनल इमोशन क्यों यूज़ करते हैं, ये हमें पहले समझनी चाहिए और तब जाके उस प्रोडक्ट को हमें खरीदना चाहिए। So we may feel tempted to buy these products because person who we consider our heroes tell us that they are worth buying. But we need to understand the way in which advertisements work because advertisements influence our lives in a great way. How does an advertisement get made? Advertising plays an important role in making a brand name. Advertising is normally made by advertising agencies, which help in devising a marketing strategy. Campaigning is done carefully by the companies to promote their products. Given the extent of influence advertisement has on our lives, it is obvious that making an advertisement is not an easy job. The main objective of an advertisement is to entice people to buy a particular brand. In other words, after seeing an advertisement, people should be drawn towards the brand. This requires a lot of time, effort, and money on the part of the advertiser. Running the advertisement on a single medium does not work. The advertiser needs to use almost all the available media to strengthen the recall value of a brand. You may have observed that a new campaign becomes omnipresent on all types of media. You can see the same advertisement on TV, in newspaper and magazine, on huge hoardings, and will get to hear the same catch line on radio. This is further augmented by display advertisement on the internet. हम लोग जब कोई ब्रांड खरीदते हैं तो उसमें एडवर्टाइजिंग की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल होती है। ये इजीली नहीं बनते हैं, इसके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई है। एडवर्टाइजमेंट के एम्स होते हैं कि लोग पर्टिकुलर उस ब्रांड को देखें और उसको ज़रूर खरीदें। यहाँ पे एक कॉमिक सीन के थ्रू दिखाया गया है कि पर्सनल इमोशन के यूज़ करके कैसे प्रोडक्ट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट बनते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए। So advertisement is the main thing in which we advertise our product for selling. The seller is taking an emotional touch to take a product selling. By this emotional touch, the product is selling in market. They think about that product, their productivity and their slogan, etc. By this person can think about the product and they purchase it. Next topic, advertising and democracy. Advertising a product costs a lot of money. It's make us believe that things that are packaged and have a brand name are far better than things that do not come in packets. Democracy is based on equality. As citizens of a democratic country, people should understand that they can take a better decision about whether they wish to buy a product or not. There are various ways in which advertising links to issues of equality in a democratic society. Producing and showing advertisements in the media is very expensive. In a democracy in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tend to promote a certain lack of respect for the poor. Repeating the advertisement many times so that it registers in the minds of the people. This is important because already there are a number of advertisements of a number of brands. So repeating one's advertisement increases the chances of consumers remembering the particular brand. The high cost involved means that only large companies can advertise. People owning small businesses cannot afford to do so.
Hence, people who sold homemade pickles, pappers, jams, etc., are not as valued by consumers as the branded products. These homemade items have to be sold in local weekly markets only. Advertisements create a wrong notion in the pupils' minds regarding product quality. They make us believe that packaged and branded products are far superior in quality than the non branded ones. But in reality, the quality of the product is not related much to the packaging that it comes in. This tendency of the people of shifting to branded products and ignoring the non branded one results in the loss of livelihood of many small businessmen. डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इश्यूज ऑफ इक्वलिटी के साथ लिंक है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग में करोड़ों रुपीस खर्चे होते हैं, लॉट्स ऑफ मनी। एडवर्टाइजमेंट में मीडिया जो है बहुत एक्सपेंसिव है। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा मार्केट में हमें बार बार एक ही चीज़ को शो करवा के खरीदने के लिए माइंड में बैठा देते हैं और कि जाके जाके खरीदो। ओनली लार्ज कंपनी जो होती हैं वो लोग एफर्ट कर पाते हैं एडवर्टाइजिंग के खर्चे। अगर आप स्मॉल बिजनेस वाले हो, पापड़ वाले, पिकल वाले, जो होममेड होते हैं, स्वीट्स, जैम, ये सब बेचने वाले, ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को शो नहीं कर पाते हैं टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट को खर्चे नहीं है, प्रोडक्ट को एडवर्टाइजिंग में देने के खर्चे नहीं है। तो इन लोगों का जो प्रोडक्ट होती है वो ब्रांड और फैशनेबल कंसिडर नहीं किया जाता। ये लोग वीकली मार्केट में जाके बेचते हैं, नेबरहुड शॉप्स में जाके बेचते हैं। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा हमें ये बिलीव करवाया जाता है कि जो लूज और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है उससे बेटर है कौन से, पैकेज और ब्रांडेड वाले। तो हम ये भूल जाते हैं पैकेज से कोई लेना देना नहीं होता, क्वालिटी मेन चीज़ होती है। वजह से जो लूज और नॉन ब्रांडेड वाले ये लोग स्मॉल बिजनेस वाले हैं वो लोग अपनी जो सेल करते हैं, बिकते हैं, उनके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि लोग अब लूज प्रोडक्ट खरीदना पसंद नहीं करते, वो लोग पैकेज और ब्रांडेड प्रोडक्ट ही खरीदना चाहते हैं। डेमोक्रेसी में जैसे सारे लोग इक्वल होते हैं, बट एडवर्टाइजिंग क्या करते हैं, लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द पोर को प्रमोट करते हैं। कैसे? पोर और स्मॉल बिजनेस वाले जो होते हैं वो लोग एडवर्टाइजमेंट करने के पैसे तो उनके पास होते नहीं, तो वो लोग अपने आप को लैक ऑफ रिस्पेक्ट फील करते हैं, बुरा फील करते हैं और लोग उसे डिसमिस कर देते हैं वर्थलेस समझ के अपने लाइफ से। इसके अलावा जो ब्रांडेड प्रोडक्ट होती है वो खरीद नहीं पाते बहुत सारे लोग, तो वो लोग अपने आप को अपने आप में बैड फील करते हैं। जैसे कोई माँ है, वो देख रही है दूसरे बच्चों को ब्रांडेड साबुन से बच्चे को नहा रही है, लेकिन ये अपने बच्चों को नहीं कर पाती है, तो बेस्ट केयर नहीं दे पाती है, तो उनको बुरा फील होती है। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा रिच पीपल के लाइफस्टाइल को भी दिखाया जाता है, और कभी कभी पॉवर्टी, डिग्निटी, डिस्क्रिमिनेशन भी भूल जाते हैं बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट में। एडवर्टाइजमेंट जो प्रोडक्ट होती है वो खरीदना तो हमें सिखाते ही हैं, बल्कि उसके साथ हमें कैसे लाइफ जीना चाहिए, कैसे ड्रीम्स होना चाहिए, कैसे हमारे प्यार को हम लोग एक्सप्रेस कर सके, स्मार्ट, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल बन सके, ये भी सिखाता है। लेकिन हमें ये अवेयर होनी चाहिए कि हमें जागरूक होनी चाहिए कि एडवर्टाइजमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है, इसकी वजह से हम क्वालिटी नहीं पहचान पाते हैं। तो हमें डिसीजन लेना चाहिए कौन सी प्रोडक्ट हमें लेनी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट हमें नहीं लेनी चाहिए। Students, a huge amount of money is spent by the companies in advertisements. This is reflected in the cost of the product the consumer buys. This means that the price of the product or service is set higher because of advertising cost. Advertising is expensive. Small businesses are affected as they cannot spend such large sums of money on advertisements. Advertisements create a competition between different brands, which force the competitors to produce better products and services. Advertisements promotes brands. We judge people on the basis of the brands that they use. This affects social values negatively. Advertisements put a lot of pressure on the consumer to use an advertised product or service. Students, I just hope I make you understand and clear the concept. Thank you.